Good afternoon, everyone. Can someone tell me whether my voice is clear and is this screen clearly visible to all of you? नमस्कार नमस्कार कैसे हो आप सब? All good? Okay. So we'll be doing today and we'll try to cover as many news as possible from 26th, 27th, 28th as well as 29th. 30th की आज PDF अपलोड हो जाएगी है ना, and by 3 or 4 days we'll be covering all the backlogs, so don't worry. Okay, at least in the PDF form. Lecture wise I can take, वो तो जब कभी लेक्चर लेना होगा तो we'll take discussion thoroughly. Okay, so since we'll keep the modus operandi the same, because the news I'm covering is of 4 news and I'll be mostly restricting myself to the ESI as well as finance news that are a little bit technical, little bit regulatory news, because one liner आप सब लोग खुद पढ़ सकते हो, ठीक है? One liner आप लोग कर लो. In case if you have still any doubts, you can contact me, especially the paid course students, you can contact me on the course. Okay? अभी आ रही है आवाज सही? Can someone tell me whether my voice is now clear or should I raise it much more? एक मिनट. अब आ रही होगी अच्छे से, है ना? चलो. So first news is with respect to the launch of 3 criminal laws that recently Parliament has passed. And with respect to RBI examination, what is important for us is, in NABARD also they used to did this, and RBI में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि what exactly are those laws, और laws कौन से change हुए हैं, what were those laws previously and what is the situation as of right now, and that too superficially only. Okay, not going too much into detail. For example, if you see that Bharat Nyay Sanhita replaces the Indian Penal Code 1860. Bharatiya Sakshya, which is evidence, replaces Indian Evidence Act of 1872. And Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita replaces the Code of Criminal Procedure 1898. So what they can ask you with respect to this news is, they can just ask you what are the timeline with respect to the laws that have been changed. तो इस तरीके के क्वेश्चन IBPS ऑलरेडी एक बार पूछ चुकी है, वो इन तीनों का एग्जांपल दे देगी, ठीक है? पांचों ऑप्शन में IPC, IEA एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इनके ईयर चेंज कर देगी अलग अलग ऑप्शंस में. सो दे कैन जस्ट आस्क यू which among the following options have been changed into the new 3 criminal laws. So make sure you remember the year, ठीक है, of all the laws that have been changed. And apart from these laws, the government also is testing e-Sakshya. It's a e-mobile portal with respect to collection of the evidence. पुलिस हर जगह जाती है, ठीक है? क्राइम सीन पे जब पुलिस जाती है तो दे collect all the evidences. Either they can store it in the paper format or they can just click the photo and submit it on the cloud platform. And then by doing that, all that evidence can be accessed across the stakeholders who are utilizing this e-Sakshya platform. Okay? So that's what the utility of e-Sakshya or e-evidence platform is. Is this clear? So these are the 2 things that you should take from this news particularly. Anything else? Any confusion in this? So next is cotton consumption, second highest in 10 years as per the latest data of Ministry of Textiles. Okay, so cotton consumption by the textile industry in the current marketing season
is one of the highest this decade, says a press release. Okay, absolute figure is 325.22 lakh bids. So just one liner is important in this news, nothing else, much more than that. Next is, so this Dutch investment firm called Proces, it actually wrote off 9.6% of its stakes in Byju's. ठीक है, उन्होंने अपना लोन को राइट ऑफ कर दिया, marking the loss of $500 million. Such kind of news do always come, especially in the business or other banking examinations. So Oyo Travel Tech platform starts first luxury hotel in Dubai in this year. Another single line of news. Next is US Material Science Corning, the makers of Gorilla Glass. They have decided to set up a manufacturing unit in India. Okay, so this is Corning company, which is an American Gorilla Glass manufacturer. They have decided to invest 1,000 crores to establish a manufacturing facility in Pilaipakkam in Tamil Nadu. Okay, so this you need to remember about. Next is, so SESCO is a company that has launched assignment of life insurance policies. So these are the policies that help you decide what to do with your life insurance policies. Okay? So basically it says that ALIP provides the opportunity to receive the surrender value of the endowment policies while also preserving their life cover benefits. मान लीजिए आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है, अब आप उसको सरेंडर करो या फिर उसका पूरा पैसा निकलवा लो या फिर और सरेंडर करोगे तो आपके पास कवर नहीं है, बट बिकॉज of such kind of policies, assignment of life insurance policies, SESCO enables not only receiving the surrender value but also the life cover benefits as well. Next is, a 7-member committee has been established by under the chairmanship of SBI chairman, okay, for co-lending purposes. Co-lending, basically, if I ask you what exactly is co-lending, co-lending का हम लोगों ने 50 बार न्यूज पढ़ रखे हैं. What is co-lending? Anyone? What is co-lending? बेसिकली आपको लोन एक से ज्यादा एंटिटी दे रही है. इट्स नॉट ओनली वन सिंगल एंटिटी गिविंग यू द लोन, इट्स मोर देन वन एंटिटी jointly giving you the loan. And why is it important? And where is it important? First of all, tell me where is it important and why is it important? Co-lenders की जरूरत सबसे ज्यादा कब पड़ती है? For example, think about if any particular bank, just like SBI और HDFC, वो अपने एक पूरे थीम के लिए, for example, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है या फिर उनको MSME सेक्टर एज अ होल अक्रॉस इंडिया को लोन प्रोवाइड करना है, तो उन्होंने एक बड़ा लोन उठा रखा है फ्रॉम वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड. क्योंकि मान लीजिए उनको अगर 10,000 करोड़ का लोन चाहिए तो कोई एक बैंक तो देगी नहीं, चाहे कितनी भी खतरनाक बैंक हो. So 2 to 3 or 4, 5 banks will simultaneously give them such kind of loan, such kind of big loan, because the risk will be reduced. So that's what the purpose of this is. तो co-lending के guidelines बनाने के लिए this committee has been constituted, okay, under the chairmanship of SBI chair Surinder Rana, and the report will be presented to finance minister before the budget.
ओके, मिली गई होगी, आने वाला है बजट। नेक्स्ट इज Adani Green Energy is setting up the world's largest renewable energy park in the Khavda region of Gujarat, because they are looking to invest in about 2 lakh crores by 2030 to build 40 gigawatts of renewable energy generation capacity. Okay, if I ask you, apart from obviously the target set by Adani Green, what is the target set by Indian government to be achieved in context of renewable energy capacity by 2030? What is that target? Yes, correct. 500 gigawatt. बहुत बढ़िया. Next is, so states get 10,000 crores as capital expenditure loans so far in 2025. Total sanction at rupees 15,000 crores. Okay, so this is with respect to, how much states capital expenditure has been utilized till now. और इस डेटा को हम थोड़ा इसलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी रिसेंट में डेटा चेंज होने वाला है, बिकॉज द न्यू बजट विल कम, सो यू कैन इग्नोर दिस और सच काइंड ऑफ डेटा विच इज राइट नाउ इन डायनेमिक aspects. Okay, the budget will also tell much more capital expenditure data, not only its utilization as compared to interim budget, but also what's the future projection will be in terms of capital expenditure. Okay, next is, so Department of Telecommunication has formed a 15-member stakeholder advisory committee to seek inputs on matter related to telecommunication services and other aspects. Okay, next is Zurich Insurance Group expands its workforce in India by 40%. So they are planning to invest in India furthermore, and because of that investment, on account of that investment, 40% of the workforce will increase over the next 3 years. Next is export push. Apple, Samsung take electronics to third spot. So Apple and Samsung, which manufacture their smartphones in India under PLI scheme, have helped push electronic exports during the first 2 months of this fiscal to the third spot. So Apple FDI has been acting as a very crucial aspect in India's electronic exports. Okay. Next is trained policemen, new application center readies rollout of criminal laws. So basically same thing here. And this news is also telling you the various aspects of all these 3 criminal laws. Okay. Basically you can also file FIR electronically, and all those aspects are being mentioned here. Mandatory linking of central government health services as well as Ayushman Bharat IDs is right now on hold. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये न्यूज़ याद होगी. In one of the news we've studied that जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने बोल रखा है कि मेडिकल कॉलेजेस में अगर कोई आए तो आप कोशिश करो कि उसकी आभा आईडी भी पुट इन करके रखो. बोला था कि नहीं बोला था? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट न्यूज़? Okay, so such kind of directions are also being provided to various stakeholders in the medical ecosystem. But because at the ground level you don't understand that what compliances will be, सब लोग restrict कर देंगे. मान लीजिए even though it is mentioned कि getting आभा ID will not stop anyone from getting medical services. आभा ID नहीं मिल रही तो आप medical services को रोक नहीं सकते. बट ग्राउंड लेवल पर क्या है किसी को कुछ नहीं पता. तो दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ कनेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स हैव बीन पुट ऑन होल्ड बाय द गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ. ठीक है, सो दैट्स व्हाट द न्यूज़ इज ऑल अबाउट. इस पर कुछ और डेवलपमेंट होगा तो वी विल सी. बट अगेन नेक्स्ट थिंग इज दैट आभा आईडी का आप लोग स्टैटिक जरूर पढ़ लेना बिकॉज इट इज राइट नाउ इन द न्यूज़. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन चुपचाप से आज रिवाइज कर लेना सो दैट
at least Ministry of Health wise, you are much more sorted. Apart from obviously Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Next is regulatory news. So the first news says T+0 settlement cycle finds few takers in the initial phase. So it's like a analysis or result specific news it is. हम लोगों ने T+0 settlement की बात करी थी that SEBI allowed T+0 settlement on an optional basis. मतलब T+1 settlement भी right now market में है और T+0 settlement भी है. T+0 settlement क्या है? Settlement की हम लोगों ने बात करी थी that once you buy or at least place a buy order, what usually happens in T+1 settlement cycle क्या होता है? अगर आप कोई buy order place करो, मान लीजिए 100 HDFC बैंक के शेयर अपने बाय करे, so when do you receive these shares? आपको ये शेयर्स कब मिलेंगे? Anyone? Basically the next working day, है ना, एक दिन बाद. अब ये मत बोलना कि फ्राइडे को किया तो सैटरडे को क्यों नहीं मिले फिर, क्योंकि वर्किंग डे नहीं है मार्केट का. यू विल गेट इट ऑन मंडे ओनली. बट T+0 एलिमिनेटेड ऑल दीज एस्पेक्ट्स. T+0 से कि जिस दिन द डे व्हेन यू पुट दिस HDFC बैंक buy order, you'll receive all the shares on that day only. So that was the T+0 settlement cycle. Okay, but this was provided on an optional basis to check whether people were really interested in T+0. अगर थोड़ा ज़्यादा attraction आता तो SEBI could have implemented T+0 settlement cycle across the whole market. But आप देख ही रहे हो कि the interest is not that much high. So that's what the news is all about. Next is SEBI has updated its oversight framework for stock exchanges and other market infrastructure institutions. These changes define the structure, responsibilities of various statutory committees to enhance governance. Okay, so just like how these market infrastructure institution, at the end these are companies also, है ना, तो companies हैं तो इनके board भी होगा, board में फिर committees भी होंगी. So all these committees must have different functions और उसी functions के regarding SEBI ने guideline पकड़ा रखी. So these are the committees that SEBI talks about. Functional committees including member committee, nomination remuneration committee, oversight committee, standing committee, regulatory oversight committee. All these committees play critical role in ensuring effective governance within MIIs. So where are you going to utilize this in descriptive answers? Tell me. Anyone? आप इसको descriptive में कहाँ use करोगे? This whole news. Yes, Maharishi, correct. आप लोग इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मेंशन जरूर करना, ठीक है, एज एन एग्जांपल. व्हाटएवर यू गाइस आर टेलिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी विद इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक, यू शुड ऑलवेज मेंशन अबाउट सच काइंड ऑफ गाइडलाइंस मेंशन्ड बाय द सेबी. ठीक है, और मैनेजमेंट में भी मेंशन कर सकते हो आप लोग. वेरी गुड. So what's the composition? The composition के context में SEBI says statutory committees should include key managerial personnel, non-independent directors, independent external professionals and public interest directors. PIDs की बहुत importance है because PIDs must chair each committee and constitute at least half of the committee members. कोई भी committee बनेगी उसके कम से कम आधे member PIDs होने चाहिए और chair भी PID होना चाहिए. Next is voting on resolution require PID participation equal or greater than other members combined. So basically it's just like a resultant of the above point. These guys are saying कि PID members जब भी voting हो तो जितने बाकी member हो उतने तो होने ही चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए. So this goes to tell you that PID members should be 50% of the
committee members or more than that. Okay. Next, SEBI has specified the responsibilities and TOR terms of reference of each committee. Functions cannot be delegated except for certain operational activities. Okay, so this is also another important aspect to it. Next is, what's the compliance? The compliance is that PIDs are limited to serving on a maximum of 5 statutory committees. 5 committees से ज़्यादा one single public interest director cannot be a member. Okay. Next, independent external professionals must demonstrate integrity, sound reputation, and no conflict of interest. वगैरह वगैरह generic चीजें हैं which anybody you know every one of you must be doing in corporate governance topic. कि independent regulator या independent director की किस तरीके से होना चाहिए. Next is CCI, Competition Commission of India, rejects plea against Google. Okay, so गूगल के खिलाफ एक कंप्लेंट आई थी that they have granted exclusive access to Truecaller to share private contact information of users. Competition Commission of India ने उसको रिजेक्ट कर दिया. Next is Ultratech Cement revises offer for UAE firm. Okay, Ultratech is right now in deal to buy UAE based RAKWCT company. Next is India's external debt rises 39.7 billion on year basis to 663.8 billion as per Reserve Bank of India data. Now, how many of you, just a random question, how many of you have already seen the June circular lecture? June circular lecture कौन कौन देख चुका है कोर्स में? हाँ, यहाँ पर नहीं है कोर्स में, इसीलिए मैंने पूछा. So we've already studied this debt data in the RBI circular, okay, because as I covered, but nevertheless for others also, the India's external debt at the end of the March 2024 is at 663.8 billion dollars. अब जब भी हम लोग external debt पढ़ते हैं तो we also understand that you know what is the composition of your external debt. एक्सटर्नल डेट आपकी किस करेंसी में सबसे ज़्यादा डिनोमिनेटेड है, क्योंकि इस तरीके के अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए दैट मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट इज फ्रॉम these issues, most of the external debt are denominated in these currencies. Such type of trend based questions do really come. Okay, so external debt to GDP ratio this year is 18.7%. Debt composition, US dollar denomination is at the top of 53.8%. Or ironically, as I've already told you, that Indian rupee denominated debt is at 31.5%. तो US में डॉलर, US डॉलर में अगर आप बाहर से लोन उठा रहे हो, we can understand that it is talking about external commercial borrowings. But if we are talking about Indian rupee denominated debt, तो किस तरीके के बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग? Anyone? नहीं, ऑफलाइन की यूट्यूब स्ट्रीमिंग नहीं होगी ना, वो 3 दिन तो इसलिए हो रही थी क्योंकि डाउट डेमो क्लासेस होते हैं. यस, करेक्ट, मसाला बॉन्ड्स. इवन दो इट इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज, बट एट द एंड ये तो क्या नाम है, एक्सटर्नल डेट ही है, isn't it? So that's why you see US dollar denominated debt is at the top, Indian rupee denominated debt is at the second spot. So components of external debt, if you see, loans form at the top, currency and deposits, trade credit and advances, and lastly debt securities. ठीक है, तो सीधा सीधा अगर आपने बेसिकली सबसे ज्यादा एक्सटर्नल डेट में जो कंपोनेंट है, विच इज डायरेक्ट लोन्स दैट यू हैव टेकन फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द ग्लोब.
Next is ICCL, Indian Clearing Corporation of Limited. It's a wholly owned subsidiary of BSE, has recently come under scrutiny of SEBI because of violation of rules related to interoperability of clearing corporations. ठीक है? So you can just have this many understanding कि उस पर अभी scrutiny चल रही है, कोई penalty लगेगी तो that news becomes much more important. ठीक है? But nevertheless, have this understanding in mind कि it is right now is under scrutiny because of the interoperability aspect. Next is data with respect to participatory note investment in the month of March, which increased to 1.49 lakh crores. So participatory notes, how many of you know about it? Participatory notes की importance क्या है? मतलब एक सिंपल सी बात बता दो कि मतलब नॉर्मली कोई इन्वेस्टर आपसे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने के बजाय पी नोट के थ्रू क्यों करे? What benefit P note provides to any foreign portfolio investor? Yes, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है ना, रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, एनोनिमिटी तो नहीं होगी क्योंकि आप एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करोगे तो फिर वो डिटेल्स मांगने लग जाते हैं, बट प्राइमरीली बेनिफिट इज दैट यू आर नॉट obligated to register yourself and you can just buy these P notes offered by various entities and do investments in India. Okay? Now lastly we'll do some banking news also. Mindspace, the first real estate investment trust to issue bonds linked to sustainability. Okay? So Mindspace Business Parks will be issuing these sustainability linked bonds worth 650 crores. Next is government can now intercept and stop messages under Telecommunication Act 2023. ठीक है, तो इसकी तो हेडलाइन ही इन इटसेल्फ इज अ टेलिंग न्यूज, इसके अलावा तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है. रेस्ट इज हाउ द गवर्नमेंट कैन डू सो. इट इज अंडर these sections that they are allowed to do these things. ठीक है. Next is SEBI raises 10,000 crores through infrastructure bonds. So they'll be raising 10,000 crores at this coupon rate through its fifth infrastructure bond issuance. Now कोई भी thematic bond होता है, whether it's infrastructure bond, whether it's sustainability bond, whatever money that these people get, are they going to utilize just all these things for various sectors or for whatever the theme those bonds are associated with? Anyone? थीम बेस्ड होगा ना बेसिकली. अगर सस्टेनेबिलिटी वाला उठाया तो आप जितना भी पैसा उठाओगे वो सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स में डाल दोगे. एग्जैक्टली सेम केस हियर. whatever money that you are raising, that will be utilizing in infrastructure projects only. ठीक है. Last is SBI arm to aid direct seeded rice project in Telangana in collaboration with ICAR. ठीक है. So that's news. So this is with respect to 26th and 27th. Now we'll do 28th and 29th. Again, I'm telling you, in case if you feel any confusion with respect to any news, feel free to contact me. ठीक है. चाहे डाउट क्लास में पूछ लें, चाहे कहीं और पूछ लें. So the first news on 28th and 29th is that Gujarat Gas Limited proposes 1200 crore capital expenditure in financial year 25. So if you understand or if you see previous year questions, there are various questions like this. तो कोई भी prominent company है जो across multiple states capital expenditure का plan बना रही है, such type of questions they usually ask you. ठीक है. जैसे पिछले साल अगर RBI में अगर आपको याद हो तो they've asked Tata Steel ने इतना capital expenditure announce किया for this whole year. So be very clear with respect to what are the themes that are recurrent in nature, especially in phase 1 GA, so that you can identify what news are important and what not. Is this clear? So GGL is also India's largest city gas distribution company with 27 license in 44 districts in
Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Haryana, Punjab, Madhya Pradesh. So this is like a importance you should feel about this company. और न्यूज आपने बस इतनी याद करके रखनी है. आप उस न्यूज की इंपॉर्टेंस समझो. ये नहीं कि हर एक स्टेट आप याद करने बैठ जाओ. याद आपने यही करना है कि 1200 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 25 में ये लोग टारगेट करके चल रहे. ओके, स्पेशली इन 6 स्टेट्स. दैट्स व्हाट द न्यूज इज ऑल अबाउट. अबाउट वाला तो आपके लिए इंपॉर्टेंस बताता है न्यूज का. स्पेशली इफ द न्यूज इज अबाउट प्राइवेट कंपनी. ठीक है, पब्लिक कंपनी जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है तो उनके तो स्टैटिक आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए. वी हैव डन दीज थिंग्स इन द क्लास आल्सो. नेक्स्ट इज रिलायंस इंडिया लिमिटेड बिकम्स फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस 21 लाख करोड़ मार्केट कैप. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रिसेंटली विटनेस, मतलब आप लोग अभी जो जून में बुल रन चली है उसको विटनेस तो किया होगा आप सब लोगों ने, है ना. उस जून के बुल रन में ही मार्केट कैप ऊपर बढ़ा है. दैट्स व्हाई रिलायंस द टॉप कंपनी इन इंडियाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज becomes the first company to cross 21 lakh crore, 21 trillion market capitalization, है ना. एग्जैक्टली. तो मैं कहता हूँ आपको, I've analyzed, we in crack grade B, we have analyzed all these previous year questions. So our aim is to provide you, especially, most of the news primarily will be, all the questions that will be coming in RBI and regulatory body examinations will be totally dedicated over here. उसके अलावा we have also included some of the extra news that stays relevant for banking examinations also. ठीक है, तो RBI से related सारे news तो आपने you'll be finding here only. Next is government's gross liabilities rose by 3.4% to 171.78 lakh crores as per finance ministry. So just remember the absolute data, and even if you don't want to remember, you may leave it, because all these data, again I'm telling you, will be changing post budget, or if not changing, they'll again come in the budget. तो वहां पर रिवाइज कर लो या वहां पहली बार पढ़ लो, your choice. Next is financial year 25 GDP growth likely to be close to 7.5% as per National Council of Applied Economic Research. वो कह रहे हैं कि 7 से 7.5% के आसपास financial year 25 की GDP रहेगी. And these, as you can see, are all other agencies और उनके targets. RBI की 7.2% है. Yes, Varsha, definitely these questions can be asked. All these questions are important. Again, I'm telling you, we are preparing news on the basis of all the regulatory bodies in mind. Okay? Meenakshi, whatever news I'm discussing here, I'm also telling you the importance of what data you guys need to remember. And I'm telling you on the basis of the previous year questions. So if you are not seeing these lectures, you feel, lecture mein zyada time lagta hai, then see PYQs on your own, and this is for everyone. See PYQs on your own, okay? And then you can easily identify what data is important and what is not. Okay? No, it is not important to analyze stock market from time to time. This is, I'm just asking for those who are, having this as a hobby. आपके लिए केवल इतना है that you just focus on the news only, nothing else. I appreciate it, Varsha. Thank you. Chalo. Next is, so we have these CAFE 3 standards, corporate average fuel efficiency standards, that will be going to be introduced by April 2027. Tata Motors says will significantly impact India's passenger vehicles. Okay, so nevertheless,
while this is a only sectoral news primarily dedicated to the automobile sector, but target can come. Okay, they can ask you what exactly are the CAFE standards, uska abbreviation they can ask you, or they can ask you by what date these standards will be applicable. Okay, April 2027. And what are these? What are the changes? It says that proposed targets under CAFE 3 standards will be 91.7 grams CO2 per kilometer and 70 grams CO2 per kilometer for CAFE 4. Basically, आपके vehicles का fuel efficiency they'll be checking apart from obviously the emission aspects of it. Okay? So this only you guys need to remember what is the full form and what is the target. Next is, so Ministry of Shipping, especially in the green shipping domain, has launched a viability gap funding scheme of 15,000 crores across 10 years. Okay, because they want companies to shift to greener vessels for inland water transport. So viability gap funding is being developed by Ministry of Shipping, and ministry is asking all the companies that are right now involved in inland water transport to shift all their vessels into green vessels, जो emissions ज़्यादा ना करें, environment को impact ज़्यादा ना पहुंचाए. अब transition आसान तो रहता नहीं है, खर्चा है. Green vessels are also costly. So that's why this viability gap funding schemes are provided, so that government will also provide you some funding associated with it. Okay, details will come later on and then we can discuss it again. Next is foreign companies gets relief on loans to Indian arms. How come? It says that in a significant development, tax authorities have granted relief to foreign companies providing loan to their Indian subsidiaries. किसी फॉरेन कंपनी से, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया माइक्रोसॉफ्ट से लोन उठा रहा है, तो पहले तो उसको 18% के आसपास जीएसटी देना पड़ता था, बट नाउ नॉट एनीमोर. ठीक है. Next is integral coach factory in Chennai made history by rolling out the 75,000 coach since its inception in 1955. So the last 75,000 coach was for the part of 69th rake of Vande Bharat train set. Okay, so make sure you remember the name of this coach factory in Chennai. Next is Indian Oil to boost LNG portfolio to 20 million tons by 2030 as per the executive. So Indian Oil ka, just like how capital expenditure targets are there, Indian Oil also have target to increase its liquefied natural gas production portfolio to 20 million tons. Okay? Next is theory to set up the Energy and Resources Institute to set up institute to conserve Himalayan resources in Guwahati. Very important. Again, I'm telling you, any news that is directly related to your syllabus, especially the sustainable development and environmental issues, and theory is also very reputed institute. They are also developing a institute to conserve Himalayan resources in Guwahati. Okay? In collaboration with government of Assam, which is but obvious. Next is regulatory news. Again, SEBI raises basic demat limit 5-fold. We've already discussed this. कि जो basic demat account होता है, which government provides you without any charges, उसकी एक लिमिट 2 लाख रुपए हुआ करती थी. And we've seen कि proposal था कि उसको 2 लाख से 10 लाख कर देंगे. उस समय proposal पढ़ा था हम लोगों ने, ये अभी न्यूज आ गई. है ना? So that's what the news is. SEBI raised threshold for basic service demat account. Now the nitty-gritties you guys need to understand is कि apart from this 10 lakh which everybody would knew, हर किसी को 10 लाख तो पता ही रहेगा. अगर superficially भी हर कोई पढ़ेगा न्यूज
तो 10 लाख पता ही रहेगा, बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस and from what date it will be effective. September 1st, account maintenance charges. If the value of the demat account is less than 4 lakh, the charges are nil. अगर 4 से 10 लाख के बीच में अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आपको अकाउंट मेंटेन करने के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे. दे देना भाई, 4 लाख है तो आप कम से कम कुछ भी नहीं करोगे तो बैठे बैठे मिल जाएगा 100 रुपये. Electronic statements will be provided free of cost, and physical statement if you want, they can be charged to provide you, but not more than 25 per statement. ठीक है. And at present, if you see, if you're holding 1 lakh rupees in debt securities and 50,000 in other than debt securities, which can be equity, these are not charged anything currently. जैसे 4 लाख की लिमिट है ना, अगर 4 लाख की लिमिट है, नहीं 100 रुपीज पर ईयर रहता है वो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस. 4 लाख की लिमिट के नीचे नील है. ठीक है, दैट वाज द करंट सिचुएशन व्हेन द अकाउंट लिमिट इज 10 लाख. जब 2 लाख हुआ करती थी तो अगर आपके अकाउंट में 1 लाख की डेट सिक्योरिटीज है तो आप 0 चार्जेस दो, या 50,000 से कम की इक्विटी हो तो 0 चार्जेस दो. अगर इनसे ज्यादा हुआ, यू नीड टू गिव अकाउंट चार्जेस इन द प्रीवियस केस. ओके, सो दीज आर जस्ट प्रीवियस थ्रेशोल्ड्स. एक बार बस देख लेना, बट नए वाले अच्छे से रट लेना. एनी कंफ्यूजन इन दिस टू एनीवन? किसी को कोई दिक्कत अभी तक? So part 3, those editorial and financial stability lectures will be soon, will be taken soon, don't worry. अमृत्युंजय, ओके ठीक है. वैसे डोंट वरी, IFSC के लिए ना वील बी प्रोवाइडिंग यू रेगुलेटरी न्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो अशोक सर प्रोवाइड करता है ना, तो उसमें आपको सारी चीजें एनीवेज मिल ही जाएंगी, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए. ठीक है, नथिंग विल बी लेफ्ट टू कवर, डोंट वरी. नेक्स्ट इज SEBI allows 100% NRI corpus in gift city FPIs. It says that SEBI has allowed 100% aggregate contribution by NRI, overseas citizen of India, resident Indian in the corpus of FPIs that are based out of IFSCA. तो ये मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है? So think about any foreign portfolio investor is located in gift city. ठीक है, तो इसके पास किसी, जैसे मान लीजिए इसने कोई फंड निकाला हुआ है, ठीक है, उस फंड का कहीं से ये लोग पैसा उठाएंगे. पैसा उठाने के बाद दे कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज, isn't it? So previously what used to happen is कि such NRIs couldn't invest their whole amount into one particular fund. बट अभी उन्होंने क्या बोला है कि आप अपना FPI का पोर्टफोलियो पूरा 100% एक फंड में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. And this I remember we've already done in SEBI circular. SEBI circular में हम लोगों ने डिस्कस किया. How many of you remember that? कि NRI का 100% it was allowed from previously 50 of less than 50%. ठीक है, but this is only for FPIs based out of gift IFSC. अगर बाहर के कहीं होंगे तो उनके लिए नहीं है. नेक्स्ट इज SEBI eases trading plan norms for insiders. जैसे आपको पता है insider trading is illegal, okay, but there is flexibility also in context of insider trading. And how can it be done? That you have to showcase trading plan
via which insiders can also deal in the company's shares. तो वो ट्रेडिंग प्लान आपको पहले बताना पड़ेगा कि किस हिसाब से जो कंपनी के इंटरनल मेंबर्स हैं, they are thinking to launch or thinking to buy or sell their shares, so that the investor is also aware about it. So SEBI now allow insiders to create a trading plan specifying share price, amount and transaction date in advance. जैसे आप एक बार सोच के चलिए कि कोई कंपनी के मैनेजमेंट है, जैसे जोमेटो का जो एमडी है दीपेंद्र गोयल, वो सोचे कि मैं कल सारे जोमेटो के शेयर अपनी जितनी भी होल्डिंग है 5% की बेच दूंगा, है ना, 5% की बेच दूंगा. सो अगर वो किसी को बिना बताए बेच दे, बिकॉज ही हैज सम न्यूज कि मेरा कोई एक लोन राइट ऑफ होने वाला है या फिर कोई दिक्कत होने वाली है और उसने आज ही बेच दी है, तो इट विल बी कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग बिकॉज ही हैव सम इंफॉर्मेशन विच ओनली ही नोज बिकॉज ही इज इनसाइड द कंपनी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन ही इज डूइंग ट्रेडिंग विच इज इलीगल, क्योंकि आपकी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है तो हर किसी को वो सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हर किसी ने ट्रेड करना है. Okay, so if any insider wants to do trading, he has to showcase first the plan in which how many shares he want to sell at or he want to buy at what price and at what date. तो सेबी ने बोला पहले आप ये करके दो. Next is the minimum cool off period between disclosure and implementation of trading plan has been reduced from 6 months to 4 months. तो पहले 6 महीने पहले आपने ये सारे ट्रेडिंग प्लान की डिटेल्स देनी थी, वो रिड्यूस करके 4 महीने कर दिया. अब 4 महीने मतलब आज बोल दो तो 4 महीने बाद यू कैन एग्जीक्यूट दैट प्लान. A 20% price range for buying and selling shares within the trading plan has been introduced. ठीक है. Next is adjustment can be made for corporate action like bonus issues and stock split after plan approval, and these amendment will take effect after 3 months. ठीक है, of the trading plan execution. Next is SEBI titles norms on financial influences and eases rules for delisting. तो financial influences के लिए regarding how many of you have seen SEBI chairperson talking about these financial influences? अभी recently SEBI chairperson का वीडियो बहुत वायरल हो रहा था where she was talking about these financial influences. आप लोगों में से किसी ने देखा? And she was मतलब बेसिकली उन्होंने एक बात बोली थी, अगर आपके मुंह से निकला है स्टॉक, किसी भी स्टॉक का नाम अगर आपने बताया है, then you are you know financial advisor. सीधी बात उन्होंने बोल दी, अगर आप किसी स्टॉक के बारे में बता रहे हो, you will be considered as financial advisor. और अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के ये सारी एडवाइस दे रहे हो, then you will be penalized. सिंपल सी बात. चुपचाप से अगर एजुकेशन पर्पस से रखना है, एजुकेशन से पर्पस से रखो, स्टॉक का नाम मत लो. बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, एज यू कैन सी कि दे किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर देते हैं, किसी भी स्टॉक का सजेशन दे देते हैं, बोल देते हैं कि ये स्टॉक हमने खरीदा है, ये स्टॉक नहीं खरीदा है, या ये खरीद लो इतना हो जाएगा, ये खरीद लो उतना हो जाएगा, इसका चार्ट बढ़िया चल रहा है, इसका नहीं चल रहा है. ऑल दोज थिंग्स यू कैन डू ओनली इफ यू आर अ registered financial advisor. So these are the things primarily SEBI chairperson was talking about. Next, easier delisting rules. SEBI approved changes to delisting rules, making it easier for companies to exit stock exchanges. Okay, companies can now offer shareholders fixed price for shares as an alternative mechanism for delisting. जब कोई चीज आप पहली बार मार्केट में लाते हो, दिस इज कॉल्ड IPO, प्राइमरी इशू. बट मान लो कंपनी को मार्केट से एग्जिट करना है, मैं अपने सारे शेयर जितने भी शेयर होल्डर्स के पास है वापस लेना चाहती हूँ, तो प्राइमरीली सेबी ने वो सारे रूल्स को विच वील स्टडी इन सेबी सर्कुलर्स, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाती है, थोड़ा इजी बनाती है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो हैज प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म वेयर कंपनीज कैन पे फिक्स्ड प्राइस टू ऑल दीज शेयर होल्डर्स while delisting all their stocks. So make sure you remember that. Next is RBI rejigs SARC currency swap plan. So how many of you remember this? हम लोगों ने सर्कुलर में पढ़ा था, किस किस को याद है?
जून सर्कुलर में हम लोगों ने पढ़ा था ये. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस रिमेंबर दिस? So primarily SARC, RBI also provides currency swap plan. मतलब इन केस जैसे भूटान को अगर रिक्वायरमेंट है कुछ इंडिया से इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए और उनके पास फॉरेक्स खत्म हो गया, तो अपनी करेंसी और इंडियन करेंसी का स्वैप ले सकते हैं वाया दिस करेंसी स्वैप प्लान ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना. सो इन दिस केस what are the features of such kind of plans? Primarily this is effective from 24 to 27, isn't it? Next is all these swap plans will be bilateral only. कोई ऐसा नहीं कि एक मल्टीलेटरल बना दिया है कि भूटान वाला नेपाल का ले सकता है, नेपाल वाला इंडिया का ले सकता है, इंडिया वाला बांग्लादेश का ले, ऐसे नहीं. आपने करने बायलेटरल करने, मतलब इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इस तरीके से. ओनली बायलेटरल will be there. It will be available to all SARC members including Pakistan, Afghanistan and Maldives. Even though you think कि मामला सही नहीं चल रहा है, but plan तो plan है. Total corpus of this support will be 25,000 crore rupees. But in terms of US dollar and euros also you will be getting up till $2 billion. So these are the things you guys should remember about. ठीक है? Any confusion in this? किसी को दिक्कत? देखो जो क्लेम करने वाले होते हैं कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, रेप्यूटेड प्रोफेशन, उनकी हिस्ट्री पहले चेक करना जरूर देती है. वरना आजकल इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ पे लूटने वाले ज़्यादा बैठ गए और आधी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं. टेलीग्राम पे तो ये माफिया बड़ा खतरनाक चलता है. नहीं, 25,000 करोड़ रुपए, ठीक है, और 2 बिलियन यूरोज एंड डॉलर्स. चलो, गवर्नमेंट टू पार्ट फंड 18 सैटेलाइट लॉन्चेस इन द पीपीपी मॉडल. ठीक है, तो गवर्नमेंट विल आल्सो बी हेल्पिंग डेवलप सैटेलाइट्स वाया पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. So just remember the name, how many satellites they will be putting it over there. Next is SEBI has revised the criteria for inclusion and deletion of stocks from futures and options segment. Okay, तो क्या criteria? Stocks should be chosen from the top 500 stocks in terms of average daily market cap as well as average daily traded value on a rolling basis. Additionally, the stock market wide position limit should not be less than 1500 crores. तो बेसिकली बोल रहे हैं कि किसी स्टॉक को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने के रिगार्डिंग क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं. कोई भी स्टॉक जो डेली मार्केट कैप और डेली ट्रेडेड वैल्यू में अमंग्स द टॉप 500 आ रहा है, देन ओनली दे विल बी इंक्लूडेड. एंड द मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट शुड नॉट बी लेस देन 1500 crores. Next is product success framework. SEBI introduced a product success framework for single stock futures and options. The goal is to enhance liquidity. Fixed price delisting we've already discussed. Alternative delisting frameworks for investment holding companies is that listed investment holding companies can transfer underlying equity shares in other listed companies to their public shareholders. So how many of you remember the recent HDFC merger? HDFC merger किसी को पता है, मतलब याद है? अभी रिसेंटली हुआ था. HDFC Limited as well as HDFC Bank. किस-किस को याद है? और अगर याद है तो मेरे को ये भी बताओ कि HDFC Limited which was already on the stock exchange, तो जब उसके लिस्ट डीलिस्ट किया गया होगा तो उसके स्टॉक्स का क्या हुआ होगा?
Can anyone tell? All the shareholders who held these HDFC Limited stocks, what happened to those shareholders, if anyone remembers? Conversion into what? Transfer into where? Dilute करके बैंक वाला दिया गया था. Yes, correct अमृतांश. So basically all those shareholders बेसिकली इस तरीके से बोला कि एक HDFC लिमिटेड वाले को 2 HDFC बैंक के शेयर मिल जाएंगे. अगर आप एक HDFC लिमिटेड का शेयर होल्ड करते हो तो जब भी डीलिस्टिंग होगी आपका वही शेयर HDFC बैंक के 2 शेयर बन जाएंगे. दैट काइंड ऑफ प्रोसेस वाज देयर विच इज मेंशन्ड ओवर हियर कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है, जैसे अडानी एंटरप्राइजेज है, अडानी एंटरप्राइजेज अडानी ग्रीन के कुछ 30% स्टेक होल्ड करती है. तो अडानी एंटरप्राइजेस को जब आप डीलिस्ट करोगे तो जिसके पास अडानी एंटरप्राइजेज है, ठीक है, उसको 1 शेयर अडानी ग्रीन का मिल जाएगा या 3 शेयर अडानी ग्रीन के मिल जाएंगे, 2 अडानी टोटल गैस के. इस तरीके से कि आप उनको पैसा देने के बजाय कोई जिसका स्टेक आपने होल्ड कर रखा है उसी का शेयर आप शेयर होल्डर को दे दो. So that mechanism will be like this. So basically, just for the sake of simplicity, Adani Enterprises have equity of these 3 companies: Adani Green, Adani Wilmar, Adani Ports. ग्रीन के पास इनकी 30% की इक्विटी है, विलमार के पास 40% की, पोर्ट्स के पास मतलब पोर्ट्स की 30% की इक्विटी अडानी एंटरप्राइजेस के पास है. तो जब भी अडानी एंटरप्राइजेस डीलिस्ट होगा तो whoever holding अडानी एंटरप्राइजेस शेयर will be getting 3 shares of green, अडानी ग्रीन, 3 shares of विलमार, नहीं 4 shares of विलमार, 3 shares of पोर्ट्स. मतलब इस तरीके से एक मैकेनिज्म बना सकते हैं वो लोग. Because in this way proportionate distribution will be there on the basis of same equity proportion, है ना, same ratio में. Is this clear? Next is same day settlement for NPS subscribers from July 1st. क्या बोल रहे हो लोग? The new policy will ensure that contribution received by the trustee bank until 11 AM on any settlement day will be invested on the same day. जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हो, आप म्यूचुअल फंड में मान लो 2 बजे कोई इन्वेस्टमेंट पुट इन करो, बाय ऑर्डर प्लेस करो, वो आपके अगले दिन के मार्केट प्राइस पर मिलता है आपको, isn't it? लेकिन आप 11 बजे से पहले ऑर्डर प्लेस कर दो तो सेम डे का प्राइस के बेसिस पर आपको मिल जाता है. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर और हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस थिंग? किसी ने ट्राई करके देखा है? जब ये आपकी मंथली एसआईपी वगैरह कुछ होती है, आप एसआईपी की पेमेंट 12 बजे के बाद करके देखो, फिर आपको अगले दिन के जो लास्ट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है, उसके बेसिस पे यूनिट्स अलॉट होते हैं. लेकिन आप आज के दिन में 11 बजे से पहले कर दो तो आज ही के प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट हो जाते हैं. हम भी इन्फ्लुएंसर ही हैं और क्या, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम स्टॉक का नाम नहीं बता रहे हैं बस, ठीक है. तो सेबी नहीं पकड़ेगा मैं, इवन दो आई यूज एग्जांपल्स ऑफ HDFC बैंक अ लॉट. ओके, सो अंडरस्टैंड दिस, सेम थिंग इज हैपनिंग इन हियर आल्सो. जब भी आप एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है, तो अगर 11 बजे से पहले दे दोगे तो वही सेम अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड ऑन द सेम डे, ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे होगा. नेक्स्ट इज एग्रीटेक फर्म.
FMC India launches 2 fungicides for fruits and vegetables, name being Velzo and Cosuit fungicides. Very helpful in NABARD examination. Please remember this. RBI imposes 29.6 lakh penalty on HSBC Bank for rule violation related to co-branded prepaid card operations. इस तरीके के क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर? सीक्रेट प्रोड. हाँ, टेल मी, आप लोगों में से किसी को याद है लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन आया होता कि HSBC बैंक पर कितनी पेनल्टी लगी थी? Such type of questions do come. Please remember this. And this we've also discussed in this June circular session कि RBI raises financial accommodation for states UTs by 28% to 60,118 crores. तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जितने भी स्टेट्स को वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट प्रोवाइड करी RBI ने, इस साल सबका एग्रीगेट करोगे तो 60,118 crores आ रही है. Now the important thing apart from this absolute value is that you guys should remember किस स्टेट की सबसे ज्यादा लिमिट थी in terms of ways and means advances. How many of you remember that? सबसे ज्यादा किसकी थी? जितने लोगों ने भी सर्कुलर पढ़ा है जून का, गलत. तमिलनाडु नहीं, नो, ये सब ना करो यार, अभी तो पढ़ा है. यूपी के बाद विच स्टेट इज देयर? बिहार नहीं है. This is just a reminder for all of you guys to please revise this circular again and again. If you look at the data, UP is at the top, then Maharashtra, and then Tamil Nadu. और लास्ट में देखोगे पुडुचेरी is at the bottom, then Mizoram, then Goa. रितेश, वो सारे सेशंस अब पेड कोर्सेज में होंगे यार, नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब बट इन पेड कोर्सेज. ठीक है, सो वेज एंड मीन्स एडवांसेस में द लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 60,118 crores एंड दीज आर द data with respect to top 3 states and bottom 3 states or UTs. Ways and means advances, you guys already understand that for temporary mismatch in liquidity, तो उसको फुलफिल करने के लिए ये कोलैटरल फ्री लोन मिल जाता है. एंड द रेट एट विच दीज पीपल गेट दिस वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिक्विडिटी, क्यों, कितना रहता है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? यस, रेपो. बहुत बढ़िया. नहीं, रेपो रहता है, ओवरड्राफ्ट में रहता है रेपो +2. सो अगेन प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है, सर्कुलर वाले सेशन में दोबारा देख लेना, यू विल बी एबल टू इजीली रिलेट दैट न्यूज. Persistent heat may dash RBI's inflation hopes as per Bank of Baroda's report. वो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले बोल रहे हैं कि हीट वेव बहुत ज्यादा है, जिसके चक्कर में फसलों की दिक्कत बहुत ज्यादा हो रखी है, तो इन्फ्लेशन की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी. दैट्स व्हाई आरबीआई रेट कट में थोड़ी लगाम लगा के रखेंगे, क्योंकि आरबीआई को एट द एंड मार्केट में लिक्विडिटी अननेसेसरीली नहीं बढ़ानी है जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ जाए. ओके, नेक्स्ट इज SoftBank to invest in AI startup Perplexity. So Bloomberg SoftBank's Vision Fund is investing in US artificial intelligence startup Perplexity AI. How many of you have used Perplexity? किसी ने यूज किया Perplexity? मतलब अच्छा एप्लीकेशन है. You can just go to internet and Perplexity. It's like another chat GPT
to all of you guys, but they also provide the sources from where they utilize or they provide you the content. तो देख सकते हो आप लोग, जेमिनी और चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव है ना, इवन दो एक तरीके से रैपर ही है, वो कंटेंट पूरा चैट जीपीटी से उठा रहा है, बट यू नो इंटरफेस अच्छा है, यू कैन यूटिलाइज. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ठीक है, in case rest of the news are superficial and one liner news only. If you have any questions related to any other news, feel free to ask, otherwise we'll wind up this session. कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं. हाँ, जेमिनी भी अच्छा है. नहीं, कलरफुल तो इतना कुछ नहीं है. Viability gap funding, Ritik, is actually if government thinks any project is, technically viable and socially desirable, but financially एक प्राइवेट कंपनी खुद नहीं बना सकती पूरा वो, तो फिर वो कुछ परसेंटेज फंड प्रोवाइड करा देते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक टोल कंस्ट्रक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक पूरी रोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत लोगों को फायदा भी मिलेगा. सो इन दैट केस व्हाट दे डू इज कि 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट सरकार देख लेती है वाया दीज वायबिलिटी गैप फंडिंग, और फिर बाकी प्राइवेट सेक्टर देख लेता है. 6 months रिपोर्ट, हाँ, मोर देन इनफ. इसके रिगार्डिंग शायद आपको पूछना पड़ेगा, आप info@crackgradeb.com पर पूछ सकते हो. हाँ, ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन कीप रिवाइजिंग दीस करंट अफेयर्स एंड डोंट वरी, बैकलॉग विल बी क्लियर्ड बाय दिस वीक ओनली. ओके, and thank you all for your patience. Thank you.